Hey everyone, welcome back to our channel India Technical RKS. Today we are diving into the upcoming Iqoo 13 which has already launched in China, and this is expected to hit the India market in December. With high-end spaces, a beautiful design and performance driven features, the Iqoo 13 is set to make waves. So if you are thinking about upgrading to a flagship in 2024, stick around. Let's get right into the details. So first of all, we will talk about design and display. So first up, the design. The Iqoo 13 will be available in 4 sleek colors, and these are black, green, gray and white. Yes, it's a good refined premium look and an in-display fingerprint sensor for seamless unlocking. Now let's talk about this beautiful display. The Iqoo 13 comes with a 6.82-inch E6 AMOLED screen. It's not only large but also incredibly sharp, with a resolution of 1460 into 3200 megapixel and a 516 ppi density. So whether you are gaming, watching videos or browsing, everything will look ultra clear. The display also features HDR10 Plus support and the P3 color, so colors are vibrant and true to life. And with a 144 Hz of refresh rate, you will get super smooth scrolling gaming and animations. Plus, it's protected by Chronic Gorilla Glass Victus 2. Yes, it will be Victus 2, making it durable against scratches and drops. So next we'll talk about camera system. Yes, next we have the camera system. The Iqoo 13 is equipped with a triple 50 megapixel rear camera setup. Here is how it breaks down. We have a Sony IMX 921 for the main sensor and ISO CELL JN1 for the ultra wide, and a Sony IMX 826 for telephotos. And all 3 cameras come with optical images stabilization and giving you sharp image, smooth video even with movements. This camera system also supports 8K UHD video recording, perfect for capturing incredibly detailed videos. On the front, we have 32 megapixel of selfie camera which does a great job handling low light and skin tones, ideal for selfies and video calls. Yes. So next we will talk about the performances of Iqoo 13. Under the hood, the Iqoo 13 is powered by the Snapdragon 8 Elite chipset. Yes, आप लोगों को शायद पता होगा कि फिलहाल अभी जो भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें स्नैपड्रैगन 8 इलाइट का चिपसेट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि फ़िलहाल अगले वीडियो में मैंने बात किया था OnePlus 13 के बारे में, एंड वहाँ पर भी आपको यही चिपसेट देखने को मिला है। With an octa-core processor clocking at an impressive 4.32 GHz, paired with 12 GB of RAM and an international 8 GB of virtual RAM. Yes, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल जो वर्चुअल रैम होता है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी 8 GB का। दिस फोन इज डिजाइंड टू हैंडल इंटेंस मल्टीटास्किंग, गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी विद ब्रेकिंग ए स्वीट, एंड विद 256 GB of internal storage you will have plenty of room for apps. Yes,
and also for photos and videos. However, keep in mind there is no expandable storage option on this device, and that's not so good I think, because लाइक सारे फ़ोन में अब आजकल सारे फ़ोन में जो स्टोरेज होता है ना वो एक्सपेंडेबल मिल रहा है, लेकिन iQOO 13 ने ये थोड़ा अलग किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है. सो व्हाट यू गेट इज़ what you have got. Okay, so next हम बात करने वाले हैं बैटरी एंड सर्जिंग के बारे में. One of the big highlights of the iQOO 13 is its 6150 megapixel. Yes, अभी तक 6000 प्लस जो बैटरी एमएच का फ़ोन निकला है उनमें से आपको देखने को मिलेगा OnePlus 13, एंड यहाँ पे फ़िलहाल जो लॉन्च होने वाला है वो iQOO 13. ये दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6150 मेगापिक्सल का बैटरी. This is a massive capacity, so you can go all day on a single charge without having to worry about constantly plugging in. तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बैटरी की वजह से, क्योंकि लाइक जैसे कि देखो अगर हम एप्पल के बारे में ही बात करें तो वहाँ पे बैटरी एमएच के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पुअर रिव्यू आपको बैटरी पे मिलने वाला है. लेकिन ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स यही काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बैटरी एमएच है उसको बहुत ही अलग लेवल पे इंक्रीज करके जा रहे हैं. एंड व्हेन इट्स टाइम टू चार्ज, द iQOO 13 सपोर्ट्स 100 वाट फर्स्ट चार्जिंग विथ 50 वाट ऑफ वायरलेस चार्जिंग. तो 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग आपको वही पिछले फ़ोन जो आईफोन OnePlus 13 था उसमें भी सेम आपको देखने को मिलता है. सो यू कैन क्विकली टॉप अप योर बैटरी. दिस मीन्स दैट इवन विथ हैवी यूज you would not be waiting long to get back to 100%. देखो अगर 100 वाट का चार्ज रहेगा उसके साथ अगर आपको यहाँ पे 6150 mAh का बैटरी मिलेगा, और क्या चाहिए गाइस. सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कनेक्टिविटी एंड एडिशनल फीचर. सो इन द टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी द iQOO 13 हैज़ 4G 5G, you know these are the basic things, and also you will get Bluetooth version 5.4 and Wi-Fi USB-C 3.1. and the next we will talk about software, and software will be Android version 14. yes, जो version 14 है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. and one of the software side, the iQOO 13 will run on Android version 14 with iQOO's custom skin on top. Android 14 brings new security features. तो Android 14 में आपको बहुत सारे नया सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बैटरी जो मैनेजमेंट है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा. साथ में जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वहाँ पर भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलने वाला है. सो यू कैन पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस राइट आउट ऑफ द बॉक्स. सो दिसंबर में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि OnePlus 13 भी शायद दिसंबर के अंदर ही यहाँ इंडिया पे देखने को मिलने वाला है. इट्स डेफिनेटली वन to keep an eye on if you are looking to upgrade. Yes, if you are looking to upgrade a new smartphone in 2024, so at the end you can get some special features with some special flagships. That's everything you know so far about the iQOO 13 from this high powered Snapdragon 8 Elite processor to the gorgeous AMOLED display. This phone is packed with features that make it a solid flagship choice for 2024. Let me know in the comment what you think about the iQOO 13 and if you are planning to pick one up when it drops in December. And thanks for watching this video. Don't forget to like, subscribe and hit the bell for more teach videos. Thank you so much.